जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां अथैकोनपञ्चाशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। ओं नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतभव्यमहादेवाय हरित्पिङ्गललोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाद्रवसनशदाय हृणेयाय त्रैलोक्यप्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तरकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिटे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्रे पारियात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदान्तगाय तपोन्तगाय पशुपतये व्यग्गाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने ललुक्तिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवत्तालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिर्भाय श्मशानवासिने भगवते उमापते अरिन्दमाय भगस्याक्षिपातिने पुण्योदशन नाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाङ्घ्रिकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्ताय वामदेवाय वाग्दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्तप्रतिस्तम्भकाय वसूनां स्तम्भकाय क्रवते क्रतुकराय कालाय मेघाविने मधुकराय जलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रमपूजिताय गजन्द्रात्रे गजत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभवनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सर्यायुतसमप्रभाय देवाय सूर्यनिनादिने सर्वबाधाविमोचनाय बन्धनाय सर्वदारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्तयापि भागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ॐ नमो नमः। इमं मन्त्रवरं जप्त्वा शुक्रो जठरपज्जरात् निष्क्रान्तो लिङ्गमार्णेन शम्भो शुक्रमिवोत्तट्कम् गौर्या गृहीतपुत्रार्थं विश्वेशेन ततः कृत अजरश्वाजर श्रीमान् द्वितीय इव शङ्कर ऋभिर्वर्षसहस्रेस्तु समतीर्थैर्महीतले महेश्वरात् पुनर्जात शुक्रो देवनिधिर्मुनि ददर्श शूले संसूक्ष्मं ध्याययन्तं परमेश्वरम् अन्धकं धैर्यसम्पन्नं दानवेशं तपस्विनं महादेव विरूपाक्षं चन्द्रार्द्रकृतशेखरम् अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरिशं भीमं सृक्कीणं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरन्ध्नं कपालिनं गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरं भावगोचरम् अणिमादिगुणाधारं त्रिलोकैश्वर्यदायकं वीरं वीरहरं घोरं विरूपं मांसलं पुटं
महामासदन्मुत्तं भैरवं वै महेश्वरं त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृतिकानां सुतैर्युक्तम् उन्मत्तं कृतिवाससं गजकृतिपरिधानं क्षुब्धं भुजगभूषणं दत्तालम्बं च वेतालं वीरं शाकिनीपूजितम् अघोरं घोरदैत्यज्ञं घोरघोषं वनस्पतिं भस्माङ्गं जटिलं शुद्धं भेरुण्डशतं सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डिशं चण्डिकाप्रियं चण्डतुङ्गं गुरुमन्तं नित्यमासवभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्योरगोचरं मृत्युर्मृत्युं महासेनं श्मशानारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागशतार्चितं सत्वं रजस्तमो धर्मं वासवानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपं द्रुपमहेतुकम् अर्ध्वनारीश्वरं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं हेतन् मूर्तीनां परमात्मनं शिवस्य दानवो ध्यानं मुक्तस्तस्मान्महाभयात् दिव्येनामृतवर्षेण सोऽभिषिक्त कपर्दिना तुष्टेन मोचितं तस्मात् शूलाग्राहदरोपित उक्तश्रार्थमहादैत्यो महेशानेन सौन्दक असुरसान्त्वपूर्वं यत्कृतं सर्वमहात्मना ईश्वरुवाच भो दैत्येन्द्रसुष्टोऽस्मि यमेन नियमेन च शौर्येण तव धैर्येण वरं वरय सुव्रत आराधितस्त्वया नित्यं सर्वनिधूर्तकं कल्मष वरदोऽहं वरार्हस्त्वं महादैत्येन्द्रसत्तम प्राणसन्धारणादस्ति यच्च पुण्यफलं तव त्रिभिर्वर्षसहस्रेस्तु तेनास्तु तव निवृत्ति सनत्कुमार उवाच एतच्छ्रुत्वा दकप्राह वेपमानकृताञ्जलि भूमोजानुव्ययं कृत्वा भगवन्तमुमापतिम् अन्धकुवाच भगवन्यन्मयोक्तोऽसि दीनो दीनपरात्पर हर्षगन्धदया वाचा मया पूर्वं रणाजिरे अद्य कृतं विमूढत्वान् कर्मलोकेषु गर्हितम् अजानता त्वां तत्सर्वं प्रभो मनसि मा कृथा पार्वत्यामपि दृष्टं यत्कां दोषात् कृतं मया क्षम्यतां मे महादेव कृपणो दुःखितोऽभृशं दुःखितस्य दयाकार्या कृपणस्य विशेषत दिनस्य भक्तियुक्तस्य भवतो नित्यमेव हि सोऽहं दिनो भक्तियुक्तम् आगतः शरणं तव रक्षामयी विद्यातव्या रचितोऽयं महाञ्जलि इयं देवी जगन्माता परितुष्टा ममोपरि क्रोधं विहाय सकलं प्रसन्ना मां निरीक्षतां कास्याक्रोधक्व कृपणो दैत्योऽहं चन्द्रशेखर तत्सुधानाय मन्द्रेन्दुचूडशम्भो महेश्वर कं भवात्परमोदार कञ्चाहं विवशीकृत कामक्रोधादिभिर्दोषैर्जरसा मृत्युना तथा अयं ते वीरकपुत्रो युद्धशङ्खो
महाबल कृपणं मां समालक्ष्य मामन्युवशमान्वगा तुषारहारशीतांशु शङ्खकुन्देष्टवर्णभाक् पश्येयं पार्वतीं नित्यं मातरं गुरुगौरवात् नित्यं भवद्वया निर्वैरो देवतैः सह निवशेयं गणैः सार्ध्वं शान्तात्मा योगचिन्तक मा स्मरेयं पुनर्जातं विरुद्धं दानवोद्भवं त्वत्कृपा पातु महेशान देहे तद्वरमुत्तमं। सनत्कुमार उवाच एतावदुक्त्वा वचनं दैत्येन्द्रो मौनमास्थित ध्यायं स्त्रीलोचनं देवं पार्वतीं प्रेक्ष्य मातरं ततो दृष्टस्तु रुद्रेण प्रसन्नैव चक्षुषा स्मृतवान् पूर्वतान्तात्तम् आत्मानो जन्म चातृतं तस्मिन् स्मृते च वृत्तान्ते ततः पूर्णमनोरथ प्रणम्य माता पितारो कृतकृत्यो भवत्तत पर्वत्या मूर्ध्यनुर्पाद्रात् शङ्करेण च धीमता तथाभिलषितं लेभे तुष्टाद्वालेन्दुशेखरात् एतद्व सर्वमाख्यातम् अन्धकस्य पुरातनं गाणपत्यं महादेव प्रसादात् परसौख्यदं मृत्युञ्जयश्च कथितो मन्त्रो मृत्युविनाशन पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वकामफलप्रद। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्ड अन्धकगणजीवनं प्राप्तिवर्णनं नाम 49तमोऽध्यायः। जय गुरुजी।